डॉक्टर साहब आजकल बहुत सुनने में आ रहा कि सीओपीडी के बारे में। क्या है डॉक्टर, ये आसान आपके तरीके में बताइए आप। Patient may be a passive smokers, so such type of patient will have chronic cough which will not subside with normal maybe cough syrups or other medications, and they will also feel breathless. That's what is COPD. सो ज़्यादातर लोग क्या है डॉक्टर साहब कंफ्यूज होते हैं सीओपीडी और अस्थमा के बारे में। सो इसमें डिफरेंशिएट कैसा कर सकते हो? दोनों जो है सांस की नलियों को इन्वॉल्व करते हैं। दोनों के सिम्टम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। जो अस्थमा है वो जरा यंग एज में स्टार्ट होता है, वेरेज जो सीओपीडी है थोड़ा मिडिल एज टू ओल्ड एज में स्टार्ट होता है। जो स्मोकर्स है, जो माइंस में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री। तो कौन से सिम्टम्स है कि सीओपीडी पहचान सके हम लोग? सपोज कोई साल में 3 महीने 4 महीने खांसता ही रह रहा है, खांसी उसकी जा ही नहीं रही है, और हमेशा जब भी चल रहे हैं सांस फूल रहा है। उनको ट्रीटमेंट करने के बाद जो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? सीओपीडी का डेफिनेशन में यह है कि इट्स अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज, बट इट्स नॉट अ क्यूरेबल डिजीज। सो दैट्स व्हाट वी कीप टेलिंग आवर पेशेंट्स। तो सीओपीडी के पेशेंट्स है डॉक्टर साहब, जनरली कौन सा थिंग्स रॉन्ग करते हैं डॉक्टर साहब? One is like they ignore their symptom. That is the most important things. Like somebody keeps coughing for a long time and breathless, they don't see their doctors. That is one thing. Second thing is once. हेलो डॉक्टर साहब आजकल बहुत सुनने में आ रहा कि सीओपीडी के बारे में। तो एक्चुअली ये सीओपीडी क्या है डॉक्टर, ये आसान आपके तरीके में बताइए आप। जी COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक obstructive pulmonary disease. So basically it means patient will have chronic cough and breathlessness which will go on for many years. In the setting of risk factors, like patient may be a smoker, patient may be a passive smokers. So such type of patient will have chronic cough which will not subside with normal maybe cough syrups or other medications, and they will also feel breathless. So that's what is COPD. Basically इसके नाम में ही है। COPD means chronic, means they will have cough for many months or years, and they will have breathing difficulty because of airway narrowing. So it's a very common problem, and India has almost 60 million people who are suffering from COPD. So the burden is very high in our country, so that's why we need to discuss about this particular agent. सो आप जैसा बोले इंडिया में बहुत बढ़ रहा है ये सीओपीडी, तो इसके कॉजेस क्या होते हैं डॉक्टर? उसके लिए रिस्क फैक्टर्स को जानना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर COPD इज स्मोकिंग। सो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ COPD पेशेंट वुड बी स्मोकर्स। द अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड पैसिव स्मोकिंग और पीपल हु बर्न लाइक वुड इन द किचन फॉर कुकिंग, and also the indoor pollution, the outdoor pollutions. The indoor pollution also includes people are using lots of agarbatti at home, they burn dhoop at home, they do use mosquito coils. So these are important risk factors for development of COPD in a non-smoking populations in a Indian setup. So these are the important risk factors. Apart from this, people who are working in mines or industries or coal mines, they are also at risk of developing COPD. Important risk factors in Indian patient is patient who had TB earlier, their lung becomes like small, the airways become smaller in size. So they also, some of them do develop COPD over a period of time. जो सीओपीडी पेशेंट्स है डॉक्टर, उसमें क्या होता है डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें लंग्स में? सो COPD पेशेंट्स, पहले तो हमें जानना है कि रिस्क फैक्टर्स होने चाहिए। रिस्क फैक्टर इज मोस्टली स्मोकिंग एंड अदर एयर पोल्यूशंस एटसेट्रा। सो वंस दिस स्मोक गोज इनटू द लंग्स, वो सांस की नलियों में सूजन पैदा कर देता है। तो जो भी हवा, जो भी रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स हैं, वेदर इट्स अ पोल्यूशन और स्मोकिंग, तो जब वो सांस की नली में जो धुआं जाता है उसमें सांस की नलियाँ थोड़ी सी सूज जाती है, उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। सूज जाने से फिर उसके अंदर बलगम बनना शुरू होता है, और धीरे धीरे जो सांस की नली है वो पतली हो जाती है, सूख जाती है। तो उसकी वजह से उनको बार बार खांसी आएगी, बलगम आएगा, चलेंगे तो सांस फूलेगा। और एक COPD एक ऐसी बीमारी है कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, इट विल नॉट गेट सेटल्ड, लाइक इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, इट्स अ परसिस्टेंट डिजीज़, अनलाइक आस्थमा विच इज़ यूजली रिवर्सिबल डिजीज़। सो COPD पेशेंट में जनरली जो सिम्टम्स रहते हैं वो हमेशा ही रहते हैं, ऑन एंड ऑफ। दे विल बी कॉफिंग, दे विल बी हैविंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और जैसे जैसे टाइम बीतता है उनके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं।
जैसा आप बोले थे, लोग जो ज़्यादा स्मोक करते हैं, माइंस में काम करते हैं और किचन में वुड का स्मोक जो आता है उससे सीओपीडी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है क्या डॉक्टर कि जो अदर इन्फेक्शंस है उसके वजह से भी सीओपीडी हो सकता है? जी जी, कुछ स्टडीज़ हुई है इंडिया में स्पेसिफिकली कि जिन पेशेंट को टीबी होता है, लंग्स के अंदर टीबी होता है, तो जब भी टीबी अंदर बैक्टीरिया अंदर जाता है, जब वो ठीक भी हो जाता है, तो जब वो हीलिंग का प्रोसेस होता है लंग्स के अंदर, जो हीलिंग के टाइम में लंग थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, सांस की नलियाँ थोड़ी नैरो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उसमें जो इन्फ्लामेशन है वो चलती रहती है, सांस की नलियाँ बंद होती रहती है। तो टीबी के केस में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होता ही रहता है। टीबी क्योर होने के बाद भी दे विल बी ऑलवेज फीलिंग ब्रेथलेस, दे विल बी कॉफिंग ऑन एंड ऑफ। तो इस पर्टिकुलर एंटिटी को हम टीओपीडी बोलते हैं इंडिया में, टीबी रिलेटेड सीओपीडी, विच इज़ ऑफन सीन वेरी ऑफन इन आवर कंट्री। तो ये अलग एंटिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक एनी चाइल्डहुड इन्फेक्शन, इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, probably it can present in a later age as asthma, and if asthma is not managed properly, some of these patients can go for development of COPD. सो ज़्यादातर लोग क्या है डॉक्टर साहब, कंफ्यूज होते हैं सीओपीडी और आस्थमा के बारे में। सो इसमें डिफरेंशिएट कैसा कर सकते हैं डॉक्टर? सो आस्थमा COPD, पहले हमें अब ये समझना होगा कि दोनों जो है सांस की नलियों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वी कॉल देम एयरवे डिजीज़। सांस की नलियों को इन्वॉल्व करने वाले बीमारियां हैं, इसलिए दोनों के सिम्टम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। तो बट मेन पॉइंट है कि जो आस्थमा है वो ज़रा यंग एज में स्टार्ट होता है। बच्चों में भी सुना होगा आपने कि चाइल्डहुड आस्थमा होता है, और यंग एज में जनरली दो सिम्टम्स आते हैं, खांसी के, सांस फूलने के, वीजिंग है। तो जनरली यंग एज में स्टार्ट होता है, बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। वेरेज दो COPD है थोड़ा मिडिल एज टू ओल्ड एज में स्टार्ट होता है, जो स्मोकर्स है, जो माइंस में काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो COPD थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, और जो आस्थमा है थोड़ा यंग एज में स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग इज, जो आस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री भी रहती है कि एक बच्चे को है तो उनके पेरेंट्स को भी रह सकता है, उनके सिबलिंग्स को भी रह सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री आस्थमा में ज़्यादा रहती, COPD में उतना नहीं रहती। तीसरा है कि आस्थमा में जो सांस की नली में सूजन रहती है, इट इज़ नॉट परमानेंट, वेयरएज इन COPD पेशेंट जो सांस की नली में सूजन रहता है दैट इज़ परमानेंट एंड इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। तो आस्थमा के पेशेंट में जनरली क्या होता है कि जो सिम्टम्स आते हैं थोड़े दिनों के लिए आते हैं, उसके बाद दवा लेने से वो पूरा ठीक हो जाते हैं। तो इन बिटवीन 2 episodes of asthma patient will be absolutely fine, whereas in COPD patients they will be having always or most of the times constant cough and breathlessness, which is not reversible. So we can say that asthma is a reversible airway inflammatory disease, whereas COPD is permanent and fixed kind of airway inflammatory lung disease. तो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी बात कर रहे थे और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी बात कर रहे थे। सो बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज है उसका मेन जड़ स्मोकिंग है डॉक्टर साहब। तो इसमें बेसिकली ये स्मोकिंग कैसा इफेक्ट करता है डॉक्टर साहब लंग्स में? जी जी, स्मोकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, नॉट ओनली फॉर द लंग्स एज यू सेड, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, एनी कैंसर्स इन द बॉडी. So smoking is something which I think we need to create awareness in the society that they should not start smoking. And once we find a smokers, we counsel them that they should stop smoking as soon as possible to prevent lung diseases or heart diseases or even cancers. So basically, what we inhale, the quantity of the chemicals which reaches the lungs they are in thousands. And most of these chemicals will cause some kind of inflammation, swelling again in the windpipe, and that inflammation continues and it goes on increasing, and the narrowing of the windpipe happens in these patients who are smokers. So earlier, to begin with, the inflammation will be only seen in the lungs, but over a period of time this inflammation goes into the blood and the other system get affected. So other system include heart. So many of the patients who have COPD, we have seen that they will have cardiac disease also. Most of them will have coronary artery disease. Many of them will end up with stroke and the cancers. So smoking is a risk factor for many diseases, and I think that's the reason we need to create awareness in the society that they should stop smoking as quickly as possible before they develop any kind of health issues. सो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहब, स्मोकिंग की वजह से
ऐसा लंग्स कार्डियोलॉजी नहीं तो नेफ्रोलॉजी ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। सो नॉन स्मोकर्स बोले तो नॉन स्मोकर्स बोले तो पैसिव जो स्मोकर्स है उनको कैसा इफेक्ट करता है डॉक्टर साहब? So yeah, this is very interesting and good question. Like, how do people who don't smoke get lung disease or cancer? So there are other risk factors for them. Like as we discussed earlier, that COPD is not seen only in smokers. Only 30% of the patients of COPD would be smokers. Rest 60 to 70% will not be smokers. So those group of patients will be either having exposure to indoor pollutions or outdoor pollutions, or they may be using biofuel or biomass fuel in their kitchen for a long period of time. So these are the other risk factors, like working in industries, mines, coal mines and other mines, and so that kind of exposure to dust, smoke and pollution over a period of years, that also causes similar kind of changes in the lungs which are seen in the case of smokers. So that's the reason the people, I mean, in the big cities like Delhi and all, where the pollution levels are very high, and it's not very low even in Hyderabad also. So the level of pollutions will not only damage the lungs, but it will also cause more of cardiac problem. It will cause increased risk of cancers, because the dust which we inhale, the smoke which inhale, that again causes some problem at the level of the cells. So there will be some changes in the cells, their genetic material gets mutated, changed, and that's why the risk of cancers is also rising in our country, apart from COPD and coronary artery diseases. तो ये COPD जो है डॉक्टर साहब वो जेनेटिक भी हो सकता है क्या? COPD जनरली जेनेटिक नहीं रहता है. There is one entity known as alpha-1 antitrypsin deficiency, which is like genetic kind of problem. So otherwise that group of patients are very, very less. But most of the times we hardly see any cases who are having genetic problem and causing COPD. So that one entity is there, which is not very often seen as in a clinical practice. सो जनरली डॉक्टर साहब जो लोग रहते हैं नॉर्मली खांसी आता रहता है उन लोगों को, तो कौन से सिम्टम्स है कि COPD पहचान सके हम लोग उसमें? जी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो COPD के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं. सपोज़ कोई साल में 3 महीने 4 महीने खांसता ही रह रहा है, खांसी उसकी जा ही नहीं रही है, और हमेशा जब भी चल रहे हैं सांस फूल रहा है. तो ये 2 सिम्टम्स है जो कॉमन सिम्टम्स है COPD के. तो अगर वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी, मतलब इन्फेक्शन रूल आउट करने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, कॉफ सिरप से नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम कंसीडर करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग COPD, लाइक पीपल हु आर स्मोकर्स और अदर रिस्क फैक्टर्स. सो सिम्टम्स प्लस द रिस्क फैक्टर्स, इफ वी कंबाइन दिस टू थिंग्स, देन we should suspect COPD, and it is confirmed by doing a spirometry or lung function test, wherein the people are asked to blow into the machine, and that machine will measure their lung volumes, how severe is the narrowing in the lungs, how severe is the problem, how severe or how big is the problem in their lungs. So those things can be seen on a spirometry test, which is a very important test to diagnose and to assess the severity of COPD patients. यहाँ पे एक और चीज़ हम बोलेंगे कि जो खांसी होती है उसकी बहुत सारी वजह है. खांसी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो बहुत सारी बीमारियों में आती है. खांसी हमें सिंपल ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द एयरवेज जिसको हम बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, उसमें भी खांसी आती है. ब्रोंकियल आस्थमा में भी खांसी आती है, और COPD में भी आती है. और एक और अलग बीमारी है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें लंग में थोड़ा श्रिंकेज शुरू हो जाता है, फाइब्रोसिस, उसमें भी आदमी को खांसी आती है, सांस फूलता है. और बहुत सारे लंग्स के दूसरे बीमारी है, जैसे TB है, प्लूरल इफ्यूजन है, इवन लंग कैंसर्स में भी खांसी आती है. तो एज ए डॉक्टर हम लोगों को पहचानना पड़ता है कि ये खांसी की वजह क्या है. और कई बार तो दूसरे लंग्स के डिसीज़ नहीं, बट दूसरे बीमारी से भी खांसी आती है. जैसे भाई कई बार हार्ट के पेशेंट्स को जब उनके लंग्स में पानी भर जाता है तो उसकी वजह से भी उनको खांसी आती है, सांस फूलता है. और दूसरे कुछ मेडिसिन भी रहते हैं वो लेने से, जैसे एक AC इनहिबिटर्स करके एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिससे भी खांसी आ सकती है. कई बार रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जिसको बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, उसमें भी लोगों को रात को ज़्यादा खांसी होती है. प्लस जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, साइनोसाइटिस, तो जो नाक के अंदर जो बलगम बनता है जब रात को सोते हैं, जो नाक का बलगम लंग्स में जाके लंग्स को इरिटेट करके खांसी होती है.
So there is a long list of diseases which can cause cough. So as a doctor, we are supposed to find out what is the most probable cause of cough in this patient. But generally जो COPD के patients हैं उनकी cough continuous रहती है, और जनरली जो सिंपल दवाई है, जो ब्रोंकोडायलेटर्स है या सिंपल कॉफ सिरप है, वो लेने से भी ठीक नहीं होती है, तो तब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट हैज़ सम क्रॉनिक लंग डिजीज़। तो डॉक्टर साहब ऐसे केसेस भी है क्या डॉक्टर साहब जिसमें जो पेशेंट को कॉफ नहीं है एंड उसको COPD डिटेक्ट हुआ है? I think 90% of the people of COPD will have cough. So and most of the time it may be dry cough. तो कोई sputum वगैरह भी नहीं आता. तो these are the two important symptoms. Cough will be there in most of COPD patient. Cough and breathlessness. These are the two cardinal symptoms which even most of the patient of COPD would have. So, but there are two entities actually in COPD. One is chronic bronchitis, second one is emphysema. So in chronic bronchitis, the cough is a predominant symptom. Whereas a patient has emphysema, then the breathlessness would be a predominant symptom. So yes, some of the patient may not have cough, they may have only breathlessness, like people who have emphysema. Whereas chronic bronchitis, patient would be coughing most of the time with lots of sputum coming out. And these COPD patients do have exacerbations, like their symptom will get worsened whenever they get some viral infections or bacterial infections, and these are known as exacerbation of COPD. So उनके जो symptoms है, जैसे कोई exacerbation आ गया तो और बढ़ जाते हैं जो normal है उससे ज़्यादा, तो उस टाइम में उसका treatment थोड़ा अलग रहता है। सर ये बात भी ट्रू है क्या सर कि बहुत थोड़े साल पहले हम लोगों को कोविड आया था, तो जो भी पेशेंट्स कोविड पे इफेक्टेड हुए थे वो स्लोली दे आर टर्निंग इनटू COPD पेशेंट्स. इज इट ट्रू है डॉक्टर? Lungs and I mean COVID and lungs, I think there has been a definite involvement of the lungs in COVID time. So COVID had caused lots of lung damage in the patients, and many of them have recovered. Actually it was causing more of like pneumonia like pictures, and many of them could recover. And there are very few subset of patients of COVID who are still having fibrosis. So I think maybe yes, it could be in future we need to study and see whether they are having some problem in their airways also, or it is only the ILD which was seen in patients of COVID. So I think more data is required to be produced to say that COVID is also a risk factor for development of COPD. तो जनरली पेशेंट्स जो है ना डॉक्टर साहब, ये नॉर्मल सिम्टम्स आने के बाद ही तुरंत हॉस्पिटल को आता है, नहीं तो थोड़ा बढ़ने के बाद आते हैं डॉक्टर साहब? ये बहुत बड़ा इशू है पेशेंट्स के सिम्टम्स को लेके कि द COPD इज डायग्नोस्ड, it's an underdiagnosed entity actually, because patients, if they get cough, they ignore it unless it become very severe, or unless they are too breathless, they cannot just go out of their house. So that is the reason that COPD patients are not diagnosed early. So any patient who has chronic cough, I think they should see their physicians and then get them checked to look for what is the cause of their cough and breathlessness. Otherwise, we have seen this. There are studies in India where they have seen that COPD is most underdiagnosed kind of entity in our India. So that's the reason COPD patients are not taken, or even the society doesn't recognize COPD as a major health issue. And we all know that COPD is the second most leading cause of death in our country, second to coronary artery disease. So the number of COPD cases are increasing like anything because of increased smoking and pollutions. So I think we need to again create awareness in the society, among the healthcare professional, even among the MBBS students or MBBS graduates or PG people, so that they get used to like treating and diagnosing this patient at the earliest. तो जनरली जो है डॉक्टर साहब, जब बच्चे छोटे रहते हैं दे टेक वैक्सीन्स सो दैट टू ओवरकम सम काइंड ऑफ डिजीजेस, फ्यू टाइप ऑफ डिजीजेस. सो बड़े होने के बाद भी कुछ वैक्सीन्स ऐसा है क्या डॉक्टर साहब? जी जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूजफुल क्वेश्चन पूछा आपने. वैक्सीनेशन फॉर एल्डरली इज डेफिनेटली देयर, बिकॉज इंडिया में जो है ना डॉक्टर साहब, छोटे हैं जब एक 15 ईयर्स तक लेते हैं, उसके बाद में दे फॉरगेट इट. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. For elderly there are vaccines and they are there for quite some time. So basically we have 5 vaccines now. We have flu vaccine, we have pneumonia vaccine, we have RSV vaccine, we have DPT vaccine, and we have
zoster vaccines. So these are the 5 vaccines which are being used in elderly. So what happens as we age, the immunity goes down. Like the children, they also have less immunity, and elderly also have less immunity, so they are very prone to get infections. So that's the reason these group of people need to be vaccinated. And similarly, COPD patients or patients with heart failure, patients with kidney disease, patients with liver disease, patients with cancers, patients who are having immunity issues, they need to be vaccinated at any age. But definitely this group of patients need to be vaccinated, if not early, at least around above 50 years. Basically, we need to give most of these vaccines who have risk factors, and people who don't have risk factors also we need to give vaccination for most of people who are age is more than 60 or above. So the vaccines are like flu vaccine, which should be given every year. Then we have conjugate pneumonia vaccine, which should be given once in lifetime. Then we have zoster vaccine, which should be given 2 shots 1 month apart. Then we have DPT vaccine, which is given in the childhood, but people who have not received this in the childhood, it can be given to elderly population also. Similarly, we have other vaccine like RSV vaccines. So I think that one is not available in our country. But for a society, I think we need to, as a patient, if I'm the patient, I should definitely ask my treating doctors whether I need this vaccine. If he says yes, it should be taken definitely and at the earliest. तो आप जैसा बोले थे COPD आइडेंटिफाई डायग्नोस करने के लिए ये स्पायरोमेट्री टेस्ट है बोल के, तो ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब? स्पायरोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है COPD डायग्नोस करने के लिए भी और COPD की सीवियरिटी चेक करने के लिए भी. So spirometry is a very simple test where we ask the patient to blow into the simple machine which is a spirometer, and we check their lung volumes, like how much is the narrowing in their lung volumes, and we check for reversibility also. We give some medicines, inhaled medicines, and then we see they are getting reversed or they are not getting reversed. So we have certain numbers to say that patient has COPD, like if that number is less than this, then we say that they have COPD, and we can also assess the severity of COPD based upon spirometry. So this is a very basic test, and again it is most underutilized test in most of the centers in the country. So I think we need to give again more importance to do this test in a subset of patients who are having a airway disease or restrictive lung disease. तो ये COPD में देयर एनी टाइप ऑफ स्टेजेस कुछ है क्या डॉक्टर सीवियरिटी में? Yes, there are types actually. They are grouped into, there are some gold guidelines. They are guidelines which are given by some international society. They are known as gold guidelines. So every year they come out with some guidelines. So they have given certain criteria, like how do you say this is, they have grouped them into 3 groups. Group A is there, Group B is there, Group E is there. So based upon their symptom, based upon their their severity of lung function impairment and exacerbation, like how many exacerbations or how many more symptoms they are having in a year. Based upon these certain scoring, we group them into A, B and E. And then the treatment is also decided based upon which group they are falling in. Like A group is like milder one, so they will require only 1 drug. Group B will be like moderate, so they will require at least 2 group of medicines, and group E will require the 3 medicines or the newer medicines, or maybe the surgical treatment or other intervention pulmonology, which may be required in these subsets of patients. थोड़े पेशेंट्स में डॉक्टर थोड़ा कॉफ रहने के बाद दे नेग्लेक्टेड, सो ज़्यादा दिन नेग्लेक्ट करने के बाद इज इट एनीवे इट्स गोइंग टू टर्न इनटू कैंसर, लंग कैंसर, ऐसा है क्या डॉक्टर साहब? Yes, I mean the risk factors for lung cancers are same, like smoking and pollution exposure or genetic factors. So any patient who has a chronic cough and breathlessness, they need to be screened for airway disease or interstitial lung disease. So simple investigation like chest X-ray will tell most of the things on what's happening in their lungs. So I think anyone who has cough for more than 2 to 3 weeks, they should get themselves checked by a physician or by a pulmonologist to look for TB also, which is very common in our country. So even TB has to be ruled out before we say that it's a airway disease or lung cancers or even ILD. So जो पेशेंट्स जो आते हैं डॉक्टर साहब, COPD पेशेंट्स जो आते हैं, उनको ट्रीटमेंट करने के बाद जो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं क्या डॉक्टर साहब?
जी COPD का डेफिनेशन में ही है कि इट्स अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज बट इट्स नॉट अ क्यूरेबल डिजीज सो दैट्स व्हाट वी keep telling our patients also that patients who are having COPD if we treat them aggressively they can have a normal or near normal life but we should also tell them and in fact we tell them that we cannot cure your disease so it's like a chronic lung disease it's like a heart failure or it's like a diabetes or hypertension which I mean these diseases cannot be cured but they can be definitely controlled with the medicines so it's one of the chronic conditions which involve the lungs and therapy is going to be there for a long time cure is not possible for chronic obstructive pulmonary disease but definitely the therapy if it is given properly and used properly and adequately we can expect a very good amount of results. सो अभी जो बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। सो बहुत जो हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं they need to take proper precautions for this. That's why I think COPD has to be prevented. That is the most important thing and again it comes back to smoking cessation and not to start smoking. Once we get COPD there is hardly we can do about curing it. It's just supporting and decreasing their symptoms and improving their quality of life. से COPD में ट्रीटमेंट्स कौन से तरीके के हैं डॉक्टर साहब? Yes, now COPD as we discussed earlier it's a airway disease like asthma only but there is inflammation in the airways and there is a narrowing in the airways so the medication which we give are known as bronchodilators so we give the medicines through the inhalation route and the drugs goes directly into the lungs so they will cause bronchodilation whatever narrowing happens in the lungs so the medicine goes into the lungs and they cause dilatation of lungs and also reduces inflammation if we are using inhaled corticosteroids. So we used like inhaled medications to treat COPD and there are various group of medicines which can be given through inhalation technique and yeah that's how the therapy starts and then we go on upgrading depending upon the severity of their COPD. If it's a group A then we give only single drug. If there is a group B means they have more symptoms then we add second drug. If their symptoms are more or they have more exacerbation then they may be requiring triple therapy. So we have certain criteria guidelines like what therapy and at what stage of disease we introduce those medicines. जो आप जब इनहेलर बोले डॉक्टर साहब, ज़्यादा हमारे पेशेंट में बहुत सारे लोगों को एक मिथ है कि एक बार इनहेलर यूज़ करें तो एडिक्ट हो जाते हैं, ये कितने हद तक करेक्ट है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि इनहेलर लेने की आदत पड़ जाती है एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन वी फेस एवरी डे इन आवर प्रैक्टिस लाइक whether it's an asthma patient or COPD patient that's the therapy is through inhalation route only and people are scared to take inhalers so I think the patient should not get scared because they are all tested therapies they are all being used over a period of time without any major side effects and major complications. It's just a device which is used to deliver the drugs into the lungs. It's not going to cause any addiction. It's not going to damage your lungs. It's not going to cause any addictions. So I think this fear in the society need to be removed, need to be taken care of because inhalation is the mainstay of inhalation therapy is the mainstay of treatment of COPD and asthma patients. So inhalers are not going to be addicting. Inhalers are not going to damage you. So I think the society, the people we need to tell them, we need to tell them and we need to address their fear that it's not going to harm them, it's not going to cause any kind of addictions. The other thing they ask is whether it's like I am going into the last stage of COPD or asthma so you are giving me inhaler. So it's, again that's not true. We start inhalation therapy the moment we see the patient, the moment we decide that patient has COPD and asthma and he has significant amount of symptoms so we start the therapy. It's not going to be like end stage like when we start therapy that's not the end stage of any disease. It's going to be there from the beginning and it's going to be for a long period of time. तो ज़्यादातर स्मोकर्स में क्या होता है डॉक्टर साहब, एक बार COPD डायग्नोस होने के बाद वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं, फिर बाद में समझते हैं ठीक है अभी नॉर्मल लाइफ जी सकते, तो ये कितने हद तक करेक्ट है डॉक्टर साहब? ये जनरली देखा गया है कि स्मोकिंग एकदम से छोड़ने के बाद लंग फंक्शन पूरा ठीक नहीं होता है और जो भी रिकवरी होती है इट हैपन्स स्लोली एंड जनरली से दैट द लंग फंक्शन में बिकम नियर नॉर्मल ओवर ए पीरियड ऑफ many years, may take 5 years, sometime 10 years
to normalize their lung function. So, but then it has to be, the smoking has to be stopped as early as possible before the damage goes on increasing. तो सीओपी पेशेंट्स में जो है ट्रीटमेंट भी देते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस भी है क्या डॉक्टर जो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का? हाँ, there is something known as pulmonary rehabilitation program which we have for severe COPD, even for milder COPD, where there is a, like, many things are used for this patient. The physical exercises are being taught. The education about the disease is told to the patients. The psychological counseling is given to the patient. The diet to be given to this patient. So everything is addressed in that program that is known as pulmonary rehabilitation program. So that it's like it covers most of the aspects of managing COPD, and that has shown that if those therapies are given, it improves the quality of life of a patient. It improves their symptoms becomes less troublesome, and they also have good quality of life. तो ये सीओपीडी पेशेंट्स में कौन सा टाइप ऑफ डाइट जनरली रहता है डॉक्टर साहब? डाइट का ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, बट वट एवर प्रूफ वी हैव इज़ दैट COPD patients, see, they are always breathless whenever they walk, so their calorie requirement is high and their protein requirement is high because their muscle mass may reduce over a period of time, so they start losing their muscle mass. So idea is to give them extra proteins. So basically they need to take more of proteins in their food, and if they are into respiratory failure, then we tend to reduce carbohydrate in their diet. So high protein diet with normal carbohydrate and fat with mineral trace elements will be the standard diet for most of the COPD patients. So ऐसा पेशेंट्स ट्रीटमेंट नहीं लेने से, नेग्लेक्ट करने से, it tends to go into heart problems also, doctor? Yes, so basically any lung disease, if it is not treated properly or if worsen sometime despite giving medication like COPD or interstitial lung disease, what happens is the two important functions of the lungs are to maintain oxygen in the body and to maintain ventilation also. So if the lungs are not able to do their two important function of oxygenation and ventilation, then their oxygen level will drop in the body, their carbon dioxide will increase in the body. So that stage is known as respiratory failure. Like heart failure, we have respiratory failure also. And this less levels of oxygen in the body will cause what is known as pulmonary arterial hypertension. So once we have pulmonary arterial hypertension, this will cause the dilatation of the right side of the heart. So the right side of the heart get dilated and it may become dysfunction also. So this right heart dysfunction is seen many of the patients who have having chronic lung disease, and this is known as cor pulmonale. So this is also very important and common entity which we see in our practice of treating chronic lung diseases like COPD and interstitial lung disease. And also many of the patients who are smokers will have a common risk factor, that is smoking. So they will have COPD and associated coronary artery disease. So they can have both left heart problem and right heart problem as well. तो COPD के पेशेंट्स है डॉक्टर साहब, जनरली कौन सा थिंग्स रॉन्ग करते हैं डॉक्टर साहब? One is like they ignore their symptom. That is the most important things. Like somebody keeps coughing for a long time and breathless, they don't see their patient, see their doctors. That is one thing. Second thing is once they are, whether it's a mistake from the patient side or from doctor side, the usage of spirometry is not very commonly seen in our country. The usage of spirometry, especially in the district hospital or smaller setups, will not be used adequately. So the diagnosis of diagnosing the COPD and assessing the severity of COPD may not really happen very accurately. And third thing is the therapy which is given to this COPD patient in the form of inhalations, they may not use it, and they may use it on and off whenever they have more symptoms. I think these are the 3-4 things they neglect or they are not taken care of, and then the symptoms will not get adequately controlled in this group of patients. तो हमारा प्राइम टीवी हेल्थ के व्यूअर्स के लिए आप कौन सा एडवाइस देना चाह रहे हैं सर? Any patient who has cough for a long time should be seen by a doctor, by a physician, and he will be able to decide what kind of disease you are having. Is it a simple chronic simple bronchitis because of infection, or is it a asthma related cough, or is it a COPD related cough, or any other disease like heart disease causing cough?
So don't ignore your symptoms of cough and breathlessness, and early kind of help is to be taken from the health services, so that your problem can be fixed earlier and it can be treated earlier, so the outcome can also be better in this group of patients. थैंक यू डॉक्टर साहब, Thank you, आपका वैल्यूबल सजेशंस के लिए। होप हमारा ऑडियंस आपका वैल्यूबल सजेशंस लेके फ्यूचर में उनके लंग्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो प्रिकॉशंस के लिए यूज़ करेंगे। Thank you so much. या थैंक यू डॉक्टर।